Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study the class Mammalia temperature regulation. Temperature regulation is also known as thermoregulation. Okay, what's a thermoregulation is a process that allows your body to maintain its core internal temperature. Thermoregulation वो process है जिसमें body के अंदरूनी temperature को maintain रखा जाता है, ना कम किया जाता है ना बढ़ाया जाता है. Because we are talking about mammals, mammals are endotherms. Endotherms are those animals are the organisms which maintain their body temperature. So, mammals अपना body temperature maintain रखते हैं और उनके जो maintaining range है वो 35 degree centigrade से 42 degree centigrade तक है. The mammals maintain their temperature within the range of 35 degrees centigrade to 42 degrees centigrade. How do they maintain the temperature of their body? Today we are going to study that how the mammals can maintain their body temperature, how they regulate their body temperature. So the heat production, first of all, the most important is the heat production. How to produce the heat, which is also known as thermogenesis. Thermogenesis is a process in which the heat is produced in the body of living organism. And the heat producing mechanism in the mammals is divided into two categories. Number one, stirring thermogenesis. Number two, non-stirring thermogenesis. When we are talking about stirring thermogenesis, it is muscular activity which produce thermogenesis, which produce the heat. Excuse me. The heat production by the muscular activity is stirring thermogenesis. In this process, the muscle, lectin, and myosin filaments move for creating a muscular activity. For the movement, ATP is hydrolyzed, and due to the hydrolysis of ATP, heat is produced. So heat is a byproduct by the hydrolysis of ATP. तो यहाँ पे एक बात क्लियर लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जब एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स मूव करते हैं मसल्स को मूव करने के लिए, बिकॉज ये फिलामेंट्स मसल्स में पाए जाते हैं और मसल की मूवमेंट में एक्टिन मायोसिन को फिलामेंट्स से मूव करना जरूरी है. जो ये मूव करते हैं तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है. वो एनर्जी हम एटीपी को हाइड्रोलाइज करके लेते हैं, उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी. जब एटीपी की ब्रेक डाउन हाइड्रोलाइसिस होती है उससे हमें एनर्जी मिलती है और बाय प्रोडक्ट में हीट एनर्जी भी खर्च होती है और हीट एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है थर्मोजेनेसिस के लिए. So this is called stirring thermogenesis. Sometimes it's voluntarily, sometimes non-involuntarily. ये कभी हमारे इसमें होती है इख्तियार में, कभी हमारे इख्तियार में नहीं होती. So other is it non-stirring thermogenesis. Non-stirring thermogenesis is a thermogenesis in which heat is produced by the cellular activities of the body. So non-stirring thermogenesis, the mammals have a unique capacity to generate heat by using specific enzymes for ancient evolutionary regions. The ATPase pump enzymes in plasma membranes of the most cells. When the body cools, the thyroid glands release the hormone thyroxine. Thyroxine increases the permeability of many cells to sodium ions, which leak into the cells. The ATPase pumps quickly pumps these ions out. In the process, ATP is hydrolyzed, releasing heat energy, and the hormonal triggering of heat production is called non-thermogenesis. इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक एंजाइम्स होते हैं जो मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं. इन एंजाइम्स को कहा जाता है एटीपीएज पंप एंजाइम्स, और एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन. थायराइड ग्लैंड इस हार्मोन को रिलीज करते हैं. थायरॉक्सिन क्या करता है
ये बहुत से सोडियम आयंस को सेल के अंदर जाने की इजाज़त दे देता है, यानी कि एक ऐसा क्रिएट पैदा करता है सिचुएशन कि बहुत सारे सोडियम आयंस सेल के अंदर चले जाते हैं। उन एंजाइम आयंस को, यानी कि सोडियम आयंस को सेल से बाहर निकालने के लिए एटीपीएस पंप काम करते हैं, जो आयंस को बाहर निकालते हैं। इस काम के लिए उन्हें एटीपी को हाइड्रोलाइज करना पड़ता है, और एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से हीट एनर्जी भी पैदा होती है, तो बॉडी में हीट ज़्यादा हो जाती है। दिस इज आल्सो थर्मोजेनेसिस, ये भी एक थर्मोजेनेसिस का दूसरा तरीका है। Now there is a brown fat responsible for heating and warming body. What is brown fat? You can see here is a figure of brown fat present in a bat. First of all, I will discuss something about brown fat. Is a specialized type of fat found in newborn mammals that live in cold climates and in mammals that hibernate. The brown color of fat comes from the large number of mitochondria with their iron-containing cytochromes. Deposits of brown fat are beneath the ribs and in the shoulders. A large number of heat is produced when the brown fat cells oxidize fatty acids because little ATP is made. Blood flowing past brown fat is heated and contributes to the warming of the body. So, brown fats are present between the shoulders. Shoulders के दरमियान पाए जाते हैं, उन mammals के दरमियान पाए जाते हैं, उन mammals में पाए जाते हैं, mostly newborn mammals होते हैं, या वो hibernation में जो mammals जाते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है ज़्यादातर। और इस फैट का ब्राउन को, ये सिंपल फैट, ये इसको ब्राउन को इसमें होता है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार ज़्यादा होती है और उस आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो ब्राउन नज़र आता है। और ये हीट प्रोड्यूशन कैसे करते हैं? ये फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। और जब ब्लड यहाँ से इन ब्राउन फैट में से, ये ब्राउन फैट है यू कैन सी, और ये हमारे पास ये आर्टरीज हैं, ये ब्लड लेके आ रही हैं, और जब ब्लड यहाँ से गुजरता है, इसमें से गुजर के यहाँ पे कैपिलरीज में से, फिर कैपिलरीज से दोबारा ये वेन्स में तब्दील हो जाता है, वेन्यूल्स से फिर वेन्स में, तो ये ज़्यादा गर्म हो जाता है। यू कैन सी दिस इज वार्मर ब्लड। और ये हमारे पास जो है ना ब्राउन फैट, ये वार्म है, मतलब गर्म, और वार्मर मतलब ज़्यादा गर्म ब्लड है, ब्राउन फैट ह्यूमिडिटी की वजह से। ओके, now we're going to next. There are present the neuroreceptors present in to sense temperature change called thermoreceptors. Okay, something missing. Yeah, sorry. The basal metabolic rate of birds and mammals is high and also produces heat. Basal metabolic rate is the rate of a living organism during at rest is called is basal metabolic rate. Basically, this is the burning of calories by the metabolism of living organism at rest. जबकि ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं कर रहा होता, उस वक्त उसकी कैलोरीज इतनी बर्न हो रही होती हैं, उसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसमें बेसल मेटाबॉलिक बर्ड्स और मैमल्स का हाई होता है मोस्टली दूसरे एनिमल्स की निस्बत, तो दैट्स व्हाई ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज आल्सो heat production or thermogenesis. Okay. Next are the neural receptors are present to sense temperature change called thermoreceptors. न्यूरो रिसेप्टर्स, न्यूरल जब भी बात होती है तो हम न्यूरो रिसेप्टर्स की बात करते हैं कि वो ब्रेन से हैं। These are the neurons. Receptors are those structures which receive the signals. अब जब हम कहते हैं thermoreceptors, you can see over here the word. Thermoreceptors are those structures which have the ability to sense temperature. ये temperature को sense करते हैं body के अंदर और body के बाहर. Means कि on the skin, thermoreceptors are present on the skin and thermoreceptors are present inside the body. Body के अंदर all organs में temperature change
सेंस करते हैं, बॉडी के ऊपर यानी कि स्किन के ऊपर भी ये टेम्परेचर को सेंस करते हैं। तो ये न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम थर्मो रिसेप्टर्स कहा जाता है। यू कैन सी ओवर हियर, ये हमारे पास चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर है एंड थर्मो रिसेप्टर्स फाउंड इन स्किन। ये रिसेप्टर्स जो स्किन के ऊपर हैं ये सेंस करते हैं और चेंज बॉडी टेम्परेचर फाउंड इनसाइड द body. Sorry, thermoreceptors found inside the body. Okay. Hypothalamic cells control thermoregulation have heating and cooling center. जो hypothalamic cells होते हैं वो thermoregulation को control करते हैं और ये hypothalamic cells heating और controlling center भी रखते हैं। अब heating और controlling center का क्या काम है? Heating center controls vasoconstrictions of blood vessels here and for erection, serine, and non-serine thermogenesis. Now, we are talking about heating centers. Heating centers are basically responsible to produce heat, and they produce heat by serine and non-serine thermogenesis. On the other hand, they do vasoconstrictions of blood vessels. Vasoconstrictions, they keep on preventing dissipation of the heat to the outside of the environment from the body. And also the infrared reaction work as a insulator, that help to prevent the heat moving outside the body to the environment. So अब हीटिंग सेंटर जो होते हैं ये हीट को एक तो पैदा करते हैं शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जरिए जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमिक सेल्स कंट्रोल करते हैं विच आर प्रेजेंट इन ब्रेन जो है ना सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है जिसमें थर्मो रेगुलेशन भी शामिल है। उसके अलावा ये वैसो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये रोकते हैं अंदर की हीट को बाहर जाने के लिए। एक तो ये हीट पैदा करते हैं, दूसरे अंदर की हीट को बाहर जाने के लिए रोकते हैं बजरिए वैसो कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास नॉर्मल ब्लड वेसल है और इसकी जो लेयर्स हैं, जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, उसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है जिसकी वजह से इनकी मोटाई बढ़ जाती है और यहाँ ये एरिया बढ़ जाने की वजह से अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती और बाहर का कूलिंग इफेक्ट एक लिहाज से अंदर नहीं आता, तो हीट अंदर से बाहर जाएगी तो यहाँ पे जगह कूल होगी, अदरवाइज ये कूल कम होगी निस्बतन। फर्ज होते हैं, फर्ज मैं आपको दिखाऊंगा आगे, मैंने ये इसकी फिगर रखी हुई है। हेयर भी होते हैं जो इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो वो सीधे जब इरेक्ट होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनमें एयर कैप्चर हो जाती है। एयर जो है ना वो एज इंसुलेटर काम करती है जिसकी वजह से अंदर की हीट बॉडी की बाहर नहीं जा सकती। Okay, so next we're forwarding to the cooling center controls vasodilation of blood vessels and sweating and panting. So हमारे पास जो कूलिंग सेंटर्स हैं वो vasodilation of blood, ये देखें ये डायलेट कर देती हैं, मतलब पतला कर देती हैं, थिन कर देती हैं। उसकी जो लेयर्स होती है, आउटर लेयर जो होती है वेसल्स की, स्वेटिंग पैदा करती हैं, पसीना पैदा करती हैं एंड पेंटिंग का भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हैवीली ब्रीदिंग जो होती है, ब्रीदिंग हैवीली, तो तेजी से सांस लेना पेंटिंग में आता है। इट्स आल्सो कूलिंग इफेक्ट। हाइपोथैलेमस वर्क्स ऑन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? नेगेटिव मींस मनफी। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे ही काम करता है। देयर इज नो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन थर्मोरेगुलेशन, क्योंकि जब टेम्परेचर बाहर कूल होता है तो ऑटोमेटिकली हम हीट प्रोड्यूस करेंगे बॉडी में। दिस इज नेगेटिव। बाहर कूलिंग है, अंदर हीटिंग करेंगे। अगर बाहर हीट ज्यादा है तो हम कूलिंग मैकेनिज्म करेंगे बॉडी के अंदर ताकि बॉडी कूल हो, क्योंकि बाहर हीट है। तो दिस इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, वी आर गोइंग फॉरवर्ड। ओके, ये थोड़ा सा हमारे पास हाइपोथैलेमस ब्रेन का रोल है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली।
So these are the change in the environment and thermoreceptors found in the skin. These thermoreceptors can sense temperature and send message to the brain. And thermoreceptors found inside the body can sense the temperature, change in temperature, and send to the brain. So two types of thermoreceptors are present. So brain send message to hypothalamus and also to these two, the motor area of cerebral cortex. This is the cerebral cortex area of the cerebrum and autonomic nervous system. इसमें हमारे पास sympathetic और parasympathetic nervous system होता है. Autonomic is basically which is not controlled by ourselves, it is controlled by our brain. ये voluntarily नहीं होता, involuntarily होता है. And the hypothalamus होता है. Hypothalamus क्या करता है? Thyroid releasing hormones. ये thyroid release करने वाले हार्मोन्स की करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए और ये थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन यानी कि थायरोट्रोपिन खारिज करते हैं थायराइड ग्लैंड की तरफ. थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं थायरोक्सिन खारिज करने के. अभी हमने पीछे पढ़ा है कि थायरोक्सिन क्या करता है. सो थायरोक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट जनरेशन. ये हीट जनरेट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि थायरोक्सिन ये सोडियम आयंस की मिकदार को बढ़ा देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, जिसकी वजह से एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है और हीट जनरेट होती है. नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में थायरोक्सिन का रोल है. ओके, सो जब हीट इंक्रीज होती है तो स्वेट ग्लैंड्स भी खारिज होते हैं. अगर हीट को कूल करना हो तो स्वेटिंग कूलिंग कूल्स द बॉडी, रिटेन्स हीट, इनहिबिशन रिटेन्स हीट. और ये बॉडी सेल्स में होती है. बॉडी सेल्स क्या काम करते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट जो हमारा है उसको इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट और द कूलिंग इफेक्ट. और हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड्स, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऑटोनोमिक पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम है. दिस इज इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सिबल, ये हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं. और ये क्या होता है कि एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, ये एपिनेफ्रिन खारिज करते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म. ओके, और ब्लड वेसल्स में वैसो कंस्ट्रिक्शन कौन पैदा करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और डायलेशन कौन पैदा करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पैदा करता है. मोस्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट के लिए काम करते हैं. हंगामी सूरत हाल में सिंपैथेटिक एक्टिव होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स कंडीशन में एक्टिव होते हैं. दैट्स व्हाई रिलैक्सेशन जो पैदा होती है वो वैसोडाइलेशन से पैरासिम्पैथेटिक पैदा होती है. एंड दीज आर एंट्री, ये मोटर एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स है. ये क्या करता है? वोलेंटरी रिस्पॉन्सेस पैदा करता है जिसमें हमारे पास स्केलेटल मसल्स, जो हमारे मसल्स हैं हम जो खुद काम करते हैं जानबूझ के सोच समझ के, वो है क्या हमारे पास? शिवरिंग, कांपना, एक लिहाज से थर्मोजेनेसिस भी है. उसमें हम एक्सरसाइजेस भी करते हैं जिससे भी हीट जनरेशन पैदा होती है. तो ये हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है हाइपोथैलेमस का. तो हीट यहाँ पे जनरेट होती है या कंजर्व होती है. ब्लड टेम्परेचर आइदर राइज होता है या फॉल होता है ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इन द एनवायरनमेंट. ओके, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट. सो देयर आर द इंसुलेशन इन द फॉर्म. ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर. तो इंसुलेशन हो जाती है पिलेज और फैट डिपॉजिट में. यू कैन सी ओवर हियर mammals have well insulated body, appendages have fur covering. तो ये हमारे पास फर कवरिंग है, हेयर्स होते हैं बॉडी के अंदर, लेज होती है यहाँ पे जनाब. यू कैन सी ओवर हियर ये फैट्स की लेयर होती है और ये फर्ज हैं पतले से हल्के हल्के, ये इरेक्टेड हैं. इनके इरेक्शन की वजह से क्या होता है कि इनमें एयर ट्रैप हो जाती है और ये ऐसे इंसुलेटर काम करते हैं. यहाँ पे फैटी लेयर होती है, चर्बी होती है. ये फैट जो है ये एज इंसुलेटर काम करती है, अंदर और बाहर की हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती, एंड इट इज वेरी हेल्पफुल. So some patches on skin are poorly insulated, so tucking is necessary. Tucking कहते हैं उस जगह का इस तरह से बैठना, इस तरह से घुमाना, दबाना या फोल्ड करना होता है बेसिकली. कि कुछ जो जगह होती है जहाँ पे इंसुलेशन ठीक नहीं होती वहाँ से उसको जगह को फोल्ड कर दिया जाता है ताकि वहाँ से हीट को कंजर्व किया जा सके.
काउंटर करंट हीट एक्सचेंज सिस्टम यूज टू conserve heat. तो काउंटर करंट यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है. काउंटर जो होते हैं, काउंटर इज मीन्स दैट opposite current. Current is the movement of blood. These are the vein and these are the, this is the artery. You can see artery की movement blood में इस तरफ से है और veins में blood की movement इस तरफ से है. तो this is counter current. ये इस तरह move करता है, इस तरफ. इस तरह मूव करने से एक्सचेंज ऑफ हीट बहुत आसान हो जाती है, डिफ्यूजन भी बहुत आसान हो जाती है. जब हम हीट की बात कर रहे हैं तो ये काउंटर करंट की वजह से बहुत तेज़ी से हीट इसके अंदर आ जाती है. तो आर्टरीज की जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है वेंस की तरफ. आर्टरीज ये बाहर जाके कूल हो जाती हैं और ये बाहर से कूल होके आती हैं तो इनमें हीट आ जाती है. तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है, when there is very harsh environment and cold there outside, तो आर्टरीज और ये जो है ना ये दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं. ये देखें, ब्लड उन आर्टरीज और वेन्स में शिफ्ट कर दिया जाता है जो एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं. अब ये बाहर जाने से पहले हीट को ट्रांसफर कर देती है इन वेन्स के अंदर, और जब ब्लड बाहर की तरफ से होता है, बाहर की तरफ जाता है, तो उसमें बहुत कम हीट होती है जो बाहर ट्रांसफर होती है. बहुत सारी हीट को बॉडी के अंदर कंजर्व कर लिया जाता है हीट बचाने के लिए, क्योंकि बाहर कोल्ड है, बहुत सख्त सर्दी है. तो इन दिस केस जब बाहर गर्मी होती है तो ये हमारे पास क्या होता है, सेम सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, अपोजिट हो जाती है. तो इसमें हमारे पास वेन्स और आर्टरीज दूर दूर हो जाती हैं और वो ट्रांसफर नहीं होती हीट, और उसको बाहर रेडिएट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट में रेडिएट कर दिया जाता है. दिस इज काउंटर करंट एक्सचेंज. सो ये काउंटर करंट की थोड़ी सी एक एग्जांपल है. इसमें और बस कैपिलरीज हैं और यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास जो है ब्लड आ रहा है आर्टरीज में से और वेन्स में से, ये इधर जा रहा होता है. और ये जो है ना ये काउंटर करंट है, वेन्स से जा रहा है अंदर की तरफ और ये आर्टरी से इसकी इस तरफ आ रहा है इसकी तरफ. दिस इज अ काउंटर करंट बेसिकली, और ये डिफ्यूजन के लिए, हीट ट्रांसफर के लिए बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म है दैट इज प्रेजेंट इन mammals. Okay, so rabbits and elephants use ear to radiate heat. तो हम जब बात करते हैं रैबिट्स और एलिफेंट्स की, इनके अंदर एक अडॉप्टेशन है जिसको ईयर्स जो होते हैं इनके बहुत बड़े होते हैं. पानी की कमी जब होती है, जब ड्राई सिचुएशन होती है, जो स्वेटिंग है यानी कि पसीना होना, पसीना इतनी पैदा नहीं होता, अगर पैदा होता भी है तो पानी कमी की वजह से ऑटोमेटिकली वो कम पैदा होता है, जिसकी वजह से हीटिंग कूलिंग मैकेनिज्म बहुत स्लो होता है और हीट बहुत ज़्यादा होती है. कूलिंग मैकेनिज्म के लिए हीट ये क्या करते हैं, हीट अपने कानों के ज़रिए रेडिएट करते हैं बॉडी की हीट को. यू कैन सी ब्लड वेसल्स आपको नज़र भी आ रही होंगी इसमें, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में कानों से हीट को बाहर खारिज करते रहते हैं, बॉडी की जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है. सो दिस इज एन एडॉप्टेशन. सो विंटर स्लीप एंड हाइबरनेशन, ये जो है ना विंटर स्लीप हाइबरनेशन बिहेवियर्स हैं, ये थर्मोरेगुलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हैं. थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे. वेरी स्मॉल एंडोथर्म गो फॉर टॉर्पर. अब हमारे पास टॉर्पर क्या होता है? So some very small endotherms, bat, cicads, can also reduce both metabolic and body temperature. Hummingbirds भी आ जाते हैं इसमें, to produce a state of dormancy called torpor. Torpor allows animals to reduce the need for food by reducing metabolism. As okay, ये मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर देते हैं. फॉर एग्जांपल जो ह्यूमिंग बर्ड की एग्जांपल लेते हैं तो ये अपने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड रात तक कम कर देती है और इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है, जिसकी वजह से इट कैन सर्वाइव. अदर वर्टिब्रेट्स जो हमारे पास दूसरे हैं, सम डेजर्टेड एनिमल्स जो होते हैं वो एस्टिवेशन करते हैं. डेजर्टेड मतलब ऐसे इलाकों में रहने वाले जो हार्श इलाकों में रहते हैं जहाँ पे पानी ना होने के बराबर होता है, तो वो क्या करते हैं, स्टेट ऑफ डोरमेंसी है जो समर यानी कि गर्मियों में चले जाते हैं, जिसको हम एस्टिवेशन कहते हैं. इसमें सेम वही होता है कि ब्रीदिंग रेट और मेटाबॉलिज्म रेट डिक्रीज हो जाता है और एनवायरमेंटल टेम्परेचर जब बढ़ता है और फूड जो है ना बहुत थोड़ी होती है और डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम होती है, तो उस वक्त ये एस्टिवेशन होती है. तो इसमें कुछ हमारे पास जो है
ہیبرنیشن کی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ موسٹلی جو ہے ونٹر سلیپ جو ہے یہ کچھ ایسے اینیملز میں ہوتی ہے جس طرح سے ہمارے پاس بیئر ہو جاتا ہے, بیجرز ہو جاتے ہیں, اپوسم ہو جاتے ہیں. تو یہ ونٹر سلیپ ان اینیملز میں زیادہ ہوتی ہے جو سردیوں میں جا کے سو جاتے ہیں, اور یہ بھی اپنا باڈی ٹیمپریچر جو ہے نا ریمینز نارمل رکھتے ہیں, لیکن یہ ان کی ٹرو ہیبرنیشن نہیں ہوتی, اس لیے اس کو ونٹر سلیپ کہا جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے ہائبرنیشن کے بارے میں. Hibernation is basically a period of winter inactivity. Inactivity مطلب یہ ونٹرز میں ایکٹیو نہیں ہوتے. موسٹلی یہ بیٹس میں ہوتی ہے, وڈ چکس ہو گئے, چمپمنکس ہو گئے, گراؤنڈ اسکوئرل ہو گئے. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں کلاس میمالیا کی جن میں ہائبرنیشن ہوتی ہے. آلسو اس کو ہم کنٹرولڈ ہائپوتھرمیا بھی کہتے ہیں. ہائپوتھرمیا از بیسیکلی لو باڈی ٹیمپریچر. ہائپوتھرمیا ایک پرابلم ہے لیونگ آرگنیزمس کے اندر, ان کا باڈی ٹیمپریچر بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ڈیتھ کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہائپوتھرمیا, کنٹرولڈ ہائپوتھرمیا کہتے ہیں ہم اس کو ہائبرنیشن کے. جو اینیملز ہوتے ہیں وہ اپنے باڈی ٹیمپریچر کو آٹومیٹکلی کنٹرول کر لیتے ہیں, اپنی میٹابولک ایکٹیویٹیز کو ویری سلو کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تاکہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا کہ گراؤنڈ اسکیل فالز from 100 to 200 breeze per minute to 4 breeze per minute. جہاں پہ یہ ایک منٹ میں 100 سے 200 بریز لیتے تھے, اب وہ 4 بریز پر منٹ لیتے ہیں. اور ہارٹ ریٹ کہاں سے آتا ہے, 200 سے 300 سے لے کے یہ 20 بیٹس پر منٹ تک چلا جاتا ہے. اور یہ اپنی باڈی کا تھرڈ ہاف دا باڈی ویٹ لوز کر دیتے ہیں, اپنی باڈی میں بہت زیادہ فیٹ ایکومولیٹ کرتے ہیں ہائبرنیشن میں جانے سے پہلے, کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس فوڈ نہیں ہوتی, اور وہ اپنی باڈی کا تقریباً آدھا ویٹ لوز کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی جو باڈی فیٹ ہے وہ ایسے میٹابولزم میں کام آتا ہے. Thank you very much for your time. So that's all. If you have any question, you can ask me from in Google Classroom. Take care. Allah Hafiz.